Welcome students. Today's our topic is stereoselective and stereospecific reaction. So we'll study one by one. At first we'll study the stereoselective reaction. Let's write STREO stereoselective reaction. Stereoselective reaction. At first we'll write the definition, what is stereoselective reaction, and then I will explain you what is the stereoselective reaction. So let's write first definition. If any molecule on reaction gives two stereoisomer like cis and trans or D and L or R and S, then the reaction is said to be stereoselective. Is said to be stereoselective reaction. And one more thing you will write, it is possible that one of the isomer is in large quantity as major product as compared to the other isomer, Now we will discuss the stereoselective. This is the definition you will write in the exam, and this example, general example, you will get A on reaction gives B and C. See in this what the stereoselective reaction says. In this stereoselective reaction, it says that A on reaction gives B and C, and B and C are stereoisomer. In this, the reaction's actual meaning is A on reaction, it will give B, and C has a product. Out of this two product, one will be the major and one will be the minor quantity. One will be major and one will be minor. So, and what they are saying, this two product they are forming, this two reactant, this two product formed, they will be stereoisomer to each other. स्टीरियोआइसोमर मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही रहेगा, बस स्ट्रक्चर अलग अलग रहेंगे. जैसे कि ये सिस रहेगा तो ये ट्रांस रहेगा, ये आर रहेगा तो ये एस रहेगा. आर और एस मतलब रेक्टस और सिनिस्टर, वो मैंने बताया है ना. आर और एस मतलब एक का डायरेक्शन क्लॉकवाइज रहेगा तो एक का एंटी क्लॉकवाइज रहेगा. मतलब दोनों का फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग रहेंगे. किसी का रोटेशन क्लॉकवाइज रहेगा, किसी का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज रहेगा. कोई सिस रहेगा, कोई ट्रांस रहेगा, या कोई डी रहेगा, या कोई एल रहेगा. लेकिन दोनों भी स्टीरियोआइसोमर रहेंगे. दोनों भी स्टीरियोआइसोमर रहेंगे, मतलब दोनों का फॉर्मूला सेम रहेगा, बस स्ट्रक्चर अलग अलग रहेंगे. ओके, दोनों अलग अलग प्रोडक्ट नहीं रहेंगे, दोनों सेम ही रहेंगे, बस स्ट्रक्चर अलग अलग रहेगा. तो ये स्टीरियोसेलेक्टिव रिएक्शन में यही है कि ये जो दो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, इसमें से एक को सिलेक्ट करना.
मतलब चॉइस है इसके पास, बी और सी दो चॉइस है, दो में से एक का मेजर रहेगा जो इन्होंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट कौन सा कर रहे हैं, जो मेजर रहेगा, वो इसी को बोलते हैं स्टीरियो सिलेक्टिव। स्टीरियो सिलेक्टिव मतलब स्टीरियो आइसोमर फॉर्म हो रहे हैं, और सिलेक्टिव मतलब स्टीरियो आइसोमर जो फॉर्म हो रहे हैं उसमें से एक सिलेक्ट करना, जो मेजर रहेगा उसको सिलेक्ट करना। तो हम लोग इसको ये तो हो गई डेफिनेशन। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल्स लेके, एक जनरल एग्जाम्पल लेके हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये टू टाइप्स के होते हैं स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन, दे आर ऑफ टू टाइप्स। एक डाई स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन होगा और दूसरा होगा एनेंशियो स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। अब तुम्हें नाम से तो समझ में आ ही गया होगा कि ये दोनों कैसे होते होंगे। पहला है डाई स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन, और दूसरा है इनेंशियो स्टीरियो सिलेक्टिव, डाई स्टीरियो सिलेक्टिव और इनेंशियो स्टीरियो सिलेक्टिव। तो फर्स्ट हम लोग डाई स्टीरियो सिलेक्टिव पढ़ेंगे। इसे नाम से ही समझ में आ रहा है, बाय द नेम ओनली वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज डाई स्टीरियो सिलेक्टिव, है ना। नेम से ही what in your do you have any hint what will be the definition of diastereoselective? Yes, we have some hint. Diastereoselective मतलब it means a product जो form होंगे, that two product will be diastereoisomer। ये जो दो product जो form होंगे may be that product will be diastereoisomer। that is only difference। so वही difference है। Yes, that is only difference। and enantiomer stereoselective means the two product form they will be enantiomer। उसमें से इन दो two product enantiomer, the two product will be enantiomer, one will be major and one will be minor, and that one which is major that is selective, that is stereoselective। अब डायस्टीरियोसेलेक्टिव मीन्स बोथ द प्रोडक्ट विल बी डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर मतलब वन विल बी सिस एंड वन विल बी ट्रांस, है ना। सिस एंड ट्रांस दे बोथ आर डायस्टीरियोसेलेक्टिव। व्हाई इट इज सो, दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, एंड so many videos I told you that what are diastereoselective, why cis and trans they both are called diastereoselective, because they both have same formula and different structure। and if in case of stereoselective reaction, in this the product form will be enantiomer. In this enantiomer stereoselective, the product form will be enantiomer, it means the product will be D, and L means dextrorotatory and levorotatory, or we can say that the product will be R and S, dextro and sinister. So such like things are there in this two, diastereo and enantiostereo. So let's explain by giving one example of each. So we'll start with diastereo. Diastereo, diastereo selective reaction. Diastereoselective reaction. Now at first we'll write the definition of it and then we'll proceed with example. If two product form are diastereo stereoisomers, that is cis and trans, then the reaction is diastereo. Then the reaction is diastereoselective reaction. See, if we are not
See, if you are not properly understanding my handwriting, so I am speaking also, I am telling also, with writing I am speaking also. So if you're not understanding, then understand it by what I'm speaking. So this is the definition. This is the definition of diastereoselective. Now the reaction we'll take is R C double bond, triple bond. It is triple bond C and R. This on reaction, H2 means in presence of palladium and nickel, also in presence of palladium and nickel. It is hydrogenation. Hydrogenation always takes place in presence of palladium and nickel. So just we'll add hydrogen, we'll break the bond, and we will add 2 hydrogen to this carbon atom. So we'll get 2 types of product, that is, one is this product, and the other one will be the cis and other will be the trans. These are the 2 product we are getting. This is cis and this one is trans. Out of this, the major one will be this. So this is the example we have taken for diastereoselective. Now only I have told you what is diastereoselective reaction. In this, only the difference is the product formed, they both will be cis or trans, because we know that diastereoselective means, diastereomers means they will be obviously cis and trans. Out of this, it is stereoselective. Stereoselective means the product form will be stereoisomer of each other, and selective means selection is one of it is major. हो गया, इतना ही है. डायस्टेरियोसेलेक्टिव मतलब जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, दे बोथ विल बी डायस्टेरियोमर. आउट ऑफ दिस, वन विल बी मेजर एंड वन विल बी माइनर, एंड सिलेक्शन इज मेड ऑफ द मेजर वन. So this is sufficient. This is one example. Example is sufficient.